निर्गुण है, माया से अतीत कहा जाता है। सत्य रज तम गुण के अतीत कहा जाता है। He is beyond the gunas. सत्य रज and तम गुण. He is called the निर्गुण. That is called nirgun. कोई माया की गुण नहीं, और सर्व अपराकित गुण के समन्वित कहा जाता है। ट्रांसेंडेंटल क्वालिफिकेशन जिसमें, so he has all the transcendental qualifications, and that is called Bhagwan, the one who has those 6 qualities. इसलिए एक ही वस्तु, एक वस्तु की अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग रूप में So दर्शन करते हैं। one thing, Bhagwan, is seen in those 3 forms by different people. So when it's dark and you're at a train station, you're standing there, it's dark. और आप देखेंगे बहुत दूर से देखेंगे In एक the ज्योति आ रही है। distance you're seeing lights. It's like a train. The train is coming. You can't see the train, you only see the lights. लाइट, ट्रेन के आप देखें ऊपर लाइट लगा रहता है, सामने जो लाइट, The light that is in front of the train. If you see that from the distance, देखिए ट्रेन नहीं दिखाई नहीं then you don't see the train. और फिर जब ट्रेन निकट थोड़ी आ जाती है, When the train comes closer, आकार दिखाई पड़ता है। you will see a और shape. फिर जब ट्रेन संपूर्ण रूप से And when the स्टेशन में जब खड़ी हो train is जाती है, standing still at the station, then you can see the real train. कहाँ जाने वाली है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जाएगी, From where he's coming, from where to he's going, where are the seat numbers, everything you can see ठीक उसी clearly. प्रकार ज्ञानी लोग So the वही एक ही knowledgeable परतत्व people, the भगवान को Jnani बहुत दूर people, से दर्शन करते हैं। they उसी भगवान की see ज्योति it, जो है उसमें Bhagwan from the distance. They see the जति Jyoti, बंदरे द्विभुजो, the lights. मुरलीधर श्याम सुंदर। भगवान की इतने सुंदर जो Bhagwan ज्योति has शरीर में such a इतने nice तेज निखारते हैं। effulgence, such a ज्ञानी लोग उसी के ही मान लेते हैं बस। big effulgence that the Jnani people, ट्रेन के they जैसे take that as Bhagwan. केवल Like the ज्योति को train in the दिखाई पड़ता है। distance, you only see the lights. और जोगी लोग और थोड़ा And yogis, नजदीक आ जाते हैं, निकट they में come आ जाते हैं। some closer. और उस समय क्या देखा, And ट्रेन what do को they आकार see? जैसे They see दिखते the हैं। shape. ठीक उसी प्रकार जोगी लोग योग दर्शन के द्वारा, So by according to performing योग yoga, process, वो क्या देखते हैं ट्रेन का? what do they एक see? आकार देखते हैं। They see the shape. और भक्त लोग And bhaktas, भगवान के निकट, अति they निकट में come आ जाते very हैं। close to Bhagwan. प्रेम भक्ति के They द्वारा can भगवान see के all the सानिध्य में आ जाते हैं, निकट details. में आ जाते हैं। Because of their love, they can come so और close. भगवान के निकट में आकर के भगवान And by के coming साक्षात close to रूप में Bhagwan, दर्शन they करते see the true form of साक्षात रूप में Bhagwan. सेवा आदि करते हैं, डायरेक्ट सेवा आदि करते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है, भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति वस पुरुष, भक्ति एव भोसी, भक्ति रेव नयति, भक्ति भगवान के निकट Bhakti brings you close to Bhagwan. भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति के द्वारा हम By साक्षात रूप में performing भगवान bhakti, की we can see Bhagwan in his true form. ज्ञान योग के द्वारा भगवान By संपूर्ण रूप से performing भगवान के Jnana दर्शन Yoga, नहीं होता। you cannot see Bhagwan in his true form. भक्ति रेव दर्शयति। ये भक्ति क्या है? What is bhakti? भक्ति means Bhakti devotional means service to Lord. devotional Seva service Bhakti. to the Lord. Service. वही भक्त के हृदय में जब That bhakta, सेवा की वृत्ति आ जाती when है, he's तो performing साक्षात seva, भगवान के दर्शन then करते हैं। he will see भगवान Bhagwan. से निकट दर्शन देते हैं। Bhakti brings you close to जो भक्त Bhagwan. जिस भावना से लेकर के भगवान के दर्शन करना With the चाहते mood हैं, you are serving वो Bhagwan, भगवान उस भक्त के निकट वही स्वरूप दर्शन that देते हैं। closeness you will get to कोई Bhagwan. चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन करना Someone is चाहते हैं। performing devotional service as शंख चक्र in गदापद्म, Bhagwan with his forehand नारायण रूप में form. भक्त दर्शन They देते see हैं। Bhagwan as जैसे ध्रुव Narayan, के दर्शन दिया, just like Dhruva Maharaj. ध्रुव के बारे में श्रवण किया। कितने लोग आप लोग ध्रुव के बारे में How सुने? many ध्रुव of के you नाम know सुने कि नहीं? Dhruva? Have you How ever many heard of Dhruva's name? know about the name of ध्रुव? ध्रुव के नाम सुना आप लोगों ने किसी ने? हैं? कितने लोग? Raise your hand. ये ध्रुव महाराज जी इतने This कठोर Dhruva तपस्या Maharaj, he performed छह महीने such के a बाद severe भगवान penance.
And then Bhagwan in the form of Narayan came in front of him. नारायण तत्व कहा जाता That's Narayan Tattva. है। अभी बताया ये भगवान की धाम भी अनंत है। अनंत Bhagwan, स्वरूप his में भगवान dham is also प्रकाशित full of होते हैं। bliss. नारायण And के रूप it's में innumerable. चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म। उसके आगे जाते हैं जो भक्त होते हैं 10 भक्त होते हैं। So you have भगवान bhaktas के that go रामचंद्र further. को They see Bhagwan as बोलो जय Ramchandra. रामचंद्र की जय। रामचंद्र के रूप में दर्शन In the form of Ramchandra, they perform devotional service to Bhagwan. रामचंद्र के। और इसके आगे जब चलते हैं भक्त And if they go भक्ति के लिए further आगे in चलते हैं, bhakti, तो वही भगवान दरगाधीश के रूप में then they मथुराधीश come के रूप in में Dwarkadish or दर्शन देते हैं। Mathuradish. और जब भक्त संपूर्ण रूप से And when भगवान they की वो माधुर्य रूप totally के दर्शन surrender, करना चाहते हैं, they want to come in Madhurya ras, स्वयं भगवान then उस भक्त के द्विभुज मुरलीधर दो हाथ में they will see Bhagwan मुरली with बजाते his बंसी flutes, बजाते हुए playing the उनको flutes, दर्शन देते हैं। and Bhagwan comes in front of them in that गोलोक form. वृंदावन कहा जाता है। And that's called यही Golok धाम की पर Vrindavan, एक-एक करके जाते where जाते that हैं, happens. वैकुंठ अयोध्या द्वारका Vaikuntha, मथुरा Ayodhya, फिर Dwarka, गोलोक। Mathura, and then Golok उस Vrindavan. वृंदावन धाम में संग भगवान नित्य गोप गोपियों के द्वारा And there Bhagwan is always present इतने सुंदर उनके with रूप his होता है। gopas, बंसी gopis, बजाते and he's playing the bamsi. नयन की तिरछी नजरों के द्वारा And with the सभियों की जो sidelong glances, he's नचाते looking at the Sakhis, और making them मनुष्य की dance. भांति इतने सुंदर लीला आदि And just like in a human इसे form, he's कहते हैं, performing such a nice लोकवत्तु lila. लीला कई बलम वेदांत में कहते हैं वही In भगवान Vedanta, it's मनुष्य के called भांति that's इतने Bhagwan. सुंदर In his human लीला form, दिखा। he's performing lilas. इसी प्रकार भगवान विराजमान होते हैं। Just like भगवत that, लोक का। Bhagwan is there हम इस present. संसार में माया में पड़े हुए हैं। We are here in माया Maya, की तरफ मोहित होकर के हम पड़े and we are completely illusioned by Maya. Where is Bhagwan? We don't know. हम कौन है ये नहीं Who पता। are we? We even don't know कल that. मैंने कहा था Yesterday I was eating, explaining this. sleeping, defending and mating। Eating, sleeping, defending, and mating. These four things are keeping us busy. आहार निद्रा भयमैथुनं च समन्न एतत् पशुभिनराणां धर्मैः तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समान। पद्म पुराण में आहार In Padma Purana it's written निद्रा eating, sleeping, भय defending, है ये हमें और एक दूसरे से लड़ाई Mating. करना है और पुत्र संतान आदि पालन पोषण इसमें हम लगे we are all stuck in these things. इससे कि हम मानते हैं बहुत बहुमान करते हैं बड़े मान लेते हैं And we think this is it. और इसमें हम संसार में पड़े रहते हैं बस And that's what's keeping us attached in this material world. जठरे शयनम तावत में इसी प्रकार हम शरीर छोड़ देते हैं And doing this, one day we leave this body, and after that, again we get a new body, and we start doing the same things. अनंत काल से हम वही काम करते जा रहे From हैं endless time, we are doing these things, these four things, no fifth things. ये चारों काम में हम Only these four things are keeping us busy from time immemorial. कभी ऊंची स्वर्गलोक में चले जाते हैं Sometimes in the कभी higher नरक में चले planets, जाते sometimes in the कभी lower मनुष्य लोक planets, में। sometimes here in the material हैं। world जिस क्षण as a human जिस being. समय हम सत्संग में आ जाते हैं But the moment we come in satsang, then ज्ञान वर्धित है we बिनु get सत्संग knowledge. विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ ना होई जब राम जी की कृपा हो जाए When we get the सब mercy सुलभ हो of जाता है Ramji, सत्संग में और उस सत्संग में तब हम then we come in विचार करते हैं, satsanga. And then ये कृष्ण कौन है we भगवान start thinking, who is Krishna? Who is Bhagwan? ये देव देवियां है कौन Who are these ये Devi तभी भगवान Devatas? सारे तत्व को बता दिया है? And then we learn about all these tattvas. पितृजंत्री पितृव्रता
भूतानि यन्ति भूतेज्जा मत जाजिनोपि माम। गीता में भगवान कहते हैं, In Gita, Bhagavan is explaining पूजा करते हैं, the one who you are worshipping. जो भूत के पूजा करते हैं, जानते In his देवा world you will go. जानते देवाप्ता देवान भूतानि यानी जान भूते भूते जो देवता की उपासना करते हैं, Who देव is लोग भी चले worshipping the demigods, जानती देवाव्रता देवान पितृजंत्री पितृव्रता पितरों की जो उपासना who's करते हैं, worshipping the forefathers, will go to the forefathers. Who's worshipping the ghosts will go to the world of the ghosts. But who's worshipping me, says Bhagavan, he will come to me. और मेरे धाम में जो चले जाते And हैं, who comes to my world, भगवान और निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं, says मेरे जो धाम Bhagavan, है, if you वो come to नित्य my सतत abode, चिरंतन धाम। उस धाम में you एक will- बार भी जब जीव चले जाते हैं, if you only come here इस once, संसार में वो नहीं आते। you will never have to come back to this world देव again. लोग, पितृलोक, From Buddha Devlok, lok, from jitne bhi lok hain, Pitralok, from all the other सब लोग में worlds, जाने के बाद, you will फिर उस have लोग के to संसार में take आना birth पड़ता है। again. किंतु जो भगवान But the धाम में one चले who जाते reaches हैं, the abode of the अब इस Lord संसार doesn't have to come back to this world. में। इसलिए स्वयं भगवान कहते And हैं that's why Bhagavan कि is मेरी saying, पूजा करो, worship me. मेरी आराधना करो, मद्भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु। मद्भक्तो मेरे भक्त बनो, Become my मुझे devotee. भक्ति करो, मद्भक्तो Worship me. मज्जाजी मेरे पूजा करो। मैं तुमको वचन देता हूँ, I promise you, मेरे भक्ति करने से by performing my मुझे ही प्राप्त bhakti, करोगे। my devotional service, you will get to me. मुझे तुम And in प्राप्त the end of करोगे। times, अंतकाले you will मां come to me. स्मरणम। अंतकाल में मुझे स्मरण करके मुझे तुम प्राप्त करो। At the moment of death, if you think of me, you will come to me. इसी प्रकार गीता में स्वयं भगवान In Gita, अपने Bhagavan is स्वरूप के तत्व के explaining सुंदर रूप में बता रहे हैं। all the philosophical ये ईश्वर truths तत्व about से himself. है, जिन पर भगवत तत्व यहाँ पर है। जीव तत्व जो है, This वही भगवान की अंश tattva of the jivas who are part and parcel of Bhagavan. तुलसीदास जी Tulsidas रामचरित मानस में भी सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। explained this as well in ये Ram आत्मा जो है, Charitmanas. This Atma जिस प्रकार is भगवान Nitya, eternal. Just like Bhagavan is eternal, transcendental, उसी प्रकार जीवात्मा भी नित्य like that, the Jiva is also eternal, इस शरीर में transcendental. अभिमान करके हम रह रहे हैं। He lives in this body, and we are only keeping pride of this body. What is this body? नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ये शरीर एक कपड़े के भांति This है। body is just like cloth, कपड़े के भांति का है। जैसे हमारे कपड़ा like clothes you wear. फट जाते हैं, पुराना When हो they जाता है, are old, पुराने कपड़े पे क्या कर देते हैं? what do we उल्टा do with old clothes? त्याग दे देते हैं, छोड़ देते हैं। We leave नया them वस्त्र परिधान and पहन we लेते take हैं। new clothes to ठीक wear. उसी प्रकार Just शरीर like जब that, when the body वृद्ध हो जाता है, becomes old, तब then अपने आप आत्मा इस शरीर को छोड़ by करके itself चली the जाती है। Atma leaves this body and goes away. ये प्रकृति के नियम ही इसी प्रकार It's a law of nature. हैं। वसांसि जीर्णानि यथाव्यः नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ठीक उसी प्रकार हम इसी प्रकार चलते जा रहे हैं। Like that, we are going on in शरीर बदलते जा रहे for हैं, eternal times. We are changing our bodies, but the Atma बदलती नहीं। doesn't change. आत्मा तो Atma नित्य शाश्वत का है, is eternal. आग में जलती नहीं है, It doesn't get burned by fire. प्रवेश नहीं It करती, doesn't पानी get उसको भिगा नहीं सकता dried by wind. It doesn't get wet by water. और ना उसकी कोई काट सकते हैं, And no one can cut it by any न weapon. दाग के पाप का। इसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ करके So Atma दूसरे शरीर में travels चले from जाती one है। body to another अब body. कैसे चले जाती है? And how? ये भी विचार है, जीवों के अपने अपने कर्म के अनुसार। By your इसी कार्य karma. कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जीव जैसे जैसे कर्म करते जा रहे The हैं, jiva उसी performs कर्म के karma, अनुसार and according to that karma, आत्मा the एक Atma शरीर से दूसरे will शरीर travel from one body to another body. और उसी शरीर की जगह वो पाप पुण्य And when अपने that आप body भोगते रहते हैं। कर्म is के there, अनुसार। then it has to एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। suffer all the karma again.
There's a katha about युधिष्ठिर this. महाराज Yudhishthir Maharaj भीष्म पितामह के निकट यही प्रश्न was पूछा, close to Bhishma Pitama ये and पितामह, asked him, ग्रैंडफादर, ये मुझे बताइए, "Oh grandfather, please explain me. जीव इस संसार में कैसे कर्मों कैसे भोगते हैं? How can a हाँ, संसार jiva में जब दुख आ जाते suffer हैं, these तो हम karmas किसी के ऊपर when we have लगाते हैं, sorrow? आरोप लगाते हैं, Then we तुम्हारी accuse वजह से someone else. मेरा We ये say, हो गया। because of you, I am ये तो suffering वास्तविक this सत्य नहीं है। misery." But that's not true. जीव अपने अपने कर्म के अनुसार वो फल भोगते रहते A jiva is just suffering the karma he has done himself. हैं। एक सुंदर कहानी सुनाया भीष्म पितामह। Bhishma Pitama explained this by a Yes. nice story. गांव में एक बुढ़िया थी, In a village, there was an old woman. She was very poor, उनके पास एक नाती था, grandson, and she has grandson। a grandson. बस वो बुढ़िया निकट में बगीचा के पास ही That old झोपड़ी बना woman करके had a रहती hut, थी। अपने छोटा बच्चे and she lived there with the grandson. नाती को पालन पोषण करती। She was raising the boy. 3-4 साल की वो And बालक, when the boy was 3-4 years old, बुढ़िया नित्य प्रत्यह बाल गोपाल की सेवा करती थी। that old woman was only serving the boy. वो छोटा बालक भी 4 साल And की जो that नाती है ना, boy नित्य प्रत्यह निकट में was बगीचा से always सुंदर सुंदर फूल के वो चुन करके लेकर के आते थे। bringing flowers from the garden, very beautiful flowers from the garden for बालक की स्वभाव होता the है grandmother. And then the grandmother served Thakurji with the flowers. थोड़ा फूल चुन करके, So the boy went quickly to the garden to get some थोड़ा flowers. प्रभात होने के पहले ही थोड़ी सी अंधेरा थी, Just before sunrise, darkness, and it's a bit वो बालक dark, जाकर के क्या करने that लगे? boy went into the garden to pick the वो बगीचा में flowers. फूल चुनने लगे, तोड़ने लगे एक-एक। क्यों बच्चा के स्वभाव होता है और कोई आकर के चुन करके नहीं लेकर के चले जाए। He was afraid someone else would get the best flowers, so he went there very early in the morning when it was still a bit dark, और वो करके फूल चुनने लगे। and he started picking the flowers. उसी फूल के पेड़ में And in that flower tree, सांप there was a snake, है, कोबरा a cobra, है, ब्लैक सर्पेंट। a black snake. और जो बच्चा जब And that boy was picking the flower, but then the snake, कोबरा समझते हो ना, सांप जो है, डेडली सर्पेंट, उसको the snake bit him. काट देने के साथ ही साथ छोटा बच्चा था 4 साल का, After biting him, the body of the boy became blue. He fell down unconscious, and there was saliva, white saliva coming from his इतने mouth. समय एक सपेरा सपेरा And then कंट्रोल द a sapera came by, the one who controls snakes, मंत्र के द्वारा and he spoke some mantras, सांप को पकड़ लिया, and the snake came और पकड़ back. करके एक After बात सुनाई। catching the snake, he put the वो snake in a सपेरे के box. कसाई था, That's ये बालक controller निकट of the snake knew में बुढ़िया की नाती है। that this boy was the इधर बुढ़िया grandson को of the समय old woman. अतिवाहित हो गए, समय चलते जा रहे हैं। आज इतने समय हो गया, बच्चा क्यों And नहीं the आ रहे फूल लेकर? हर रोज Grandmother was जल्दी आ worried जाती। now. The time has gone by and the boy has not returned बुढ़िया yet. दरवाजा पर बैठी हुई थी। She was इतने getting समय वो worried. सपेरा And ने then देखी, that controller of the उसके नाती snake को came by लेकर खाए, and और he दरवाजा खटखटाया। he took the son बुढ़िया to the दरवाजा house, खोली, grandson to the house. दरवाजा And the खोल के woman देखा कि said, उनके नाती के सारे शरीर, When she opened the door, she saw her grandson with a blue body. सारे शरीर में All the और poison मुंह से had spread in his body, ध्यान से मत and the saliva, the foam came from his mouth. बुढ़िया रोने लगी। And the क्या woman बात started to cry. सवेरे ने कहा, What देखो, happened? माता, And the controller of the snake said, Look, Mata, ये तुम्हारे बच्चे जो है, this grandson इस of बगीचा में, yours, निकट बगीचा में, he was जब picking फूल चुन flowers रहे, in the garden, वो सांप and then the snake bit him, काट दिया, और मैं इसको पकड़ करके लाया। and I have got that snake here in the box. बुढ़िया रोने लगी। The क्या woman करे? started to cry, what to do now?
सपेरा कहने लगे, And then the controller of the snake said, "Listen, मैं mother, तो सांप को पकड़ करके लाई, I have that snake here with me. आप आदेश दो, If तो you सांप को want, मैं बूटी-बूटी करके I काट can करके kill उसको that snake. मार डालता हूँ। हैं? I will ये chop him in सांप जो pieces है, and खल kill him." जाती है। हैं? भागवत गीता में सेम भगवान भी कहते हैं। In Bhagavad Gita, Bhagavad 6 प्रकार says के लोगों की जो है, there are 6 types of people उसके मारना है, देखने से मारना who you नहीं can चाहिए। kill. उसकी कहा जाता है क्या? They are called आतताई कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? terrorists. टेररिस्ट। ये 6 प्रकार के लोग These होते हैं, 6 बंदी types होता of है, terrorists उसके टेररिस्ट कहा ही जाता है। जो बिना कारण से who दूसरे के without दुख any पहुंचाते हैं, reason कष्ट give देते हैं, others misery, उसे कहा problems, जाता है, टेररिस्ट कहा जाता है। they are आतताई कहा called जाता है। terrorists. ये 6 प्रकार कौन है? So who are जो these दूसरे 6 के घर types? में आग लगाए। One who burns another one's बोला? house, और जो स्त्री को अपहरण करता है, one वो भी who टेररिस्ट माना जाता kidnaps a woman. है। महाभारत में In Mahabharata, all these things were happening. ये गीता क्या है? ये गीता महाभारत की Gita एक पार्ट कहा जाता is है। a part of the Mahabharata. 18 अध्याय में वर्णन है सर। 18 अध्याय में वर्णन है। 18 chapters. महाभारत The में Gita gives a 18 conclusion. पर्व है। एक पर्व के नाम है, इसे कहा जाता है भीष्म पर्व कहा जाता है। So one part is called Bhishma Parva of the Mahabharata. गीता है क्या चीज? गीता What उपनिषद is का है। Gita? Gita ये महाभारत Upanishad. की It's एक पार्ट है। a small part of the भीष्म Mahabharata. पर्व कहा जाता है। ये भीष्म पर्व में In Bhishma Parva, 42 a part of Mahabharata, चैप्टर 2 from chapter 42 to 2 चैप्टर 62, 18 अध्याय जो है, there are ये 18 गीता ही chapters, and that's Bhagavad कहा Gita. है। और कुछ नहीं है, गीता ही यही है। That's महाभारत what की Bhagavad एक part Gita है। is, It's a part of the Mahabharata. महाभारत belongs to भीष्म पर्व। And that's called Bhishma Parva. तो उसी में जो कथा जो मैं बता रहा हूँ, जब So the भगवान katha I'm telling, जब भीष्म पितामह when श्रेष्ठ जगह पर Bhishma तीर के ऊपर Pitama लेटे was हुए, laying on a bed of और उसी arrows, समय and युधिष्ठिर महाराज Yudhishthir came to him and asked him questions. I started about this तो इसी yesterday. के बता रही हूँ। I'm telling you about this right now as well. वो सपरे ने सपेरा कहने So लगे, that snake controller तुम said, बता दो, "Mother, आदेश tell दे दो, me, give me your ये सांप है। instruction. There's the snake." आतताई था, And that snake is a terrorist. टेररिस्ट है। इसको मार देना उचित है। We have to kill him. बुढ़िया उस समय के बाद कंकली बेटा, The woman said after a while, "Son, tell me one मेरा thing. तो बेटा तो चला गया, My grandson has नाती तो died. चला गया, मर गया। क्या कोई सांप को By killing काट the देने से, snake, मार देने से मेरा नाती will जीवित हो my जाएगा? grandson become alive again?" क्या विचार है आप लोगों What do you think? नहीं। No. का? जो गए गए, Who has gone is gone. वो कभी नहीं आएगा। He's not coming back again. आत्मा शरीर से जब चली When the जाती है, Atma leaves वो the वापिस body, नहीं आता। he doesn't come back to that body. So the Atma is gone, and he's gone, it's बुढ़िया gone. कहने लगी, बेटा सपरे कहने लगी, बेटा मेरा नाती तो चला गया, मर गया। So the तो woman सांप को मार said, करके हमें फायदा क्या होगा? "Controller of the snake, when my grandson is dead, what use is it सपरे to कहने kill the लगी, खल snake?" जाती है, So आतताई the है। controller of the दुष्ट है। snake said, "He is a terrorist, this इसलिए snake. इसको मार देना ही We उचित है। have to kill him. नहीं तो दूसरे के काटेगा। Otherwise he will bite another person." सांप देखते ही सांप को क्या करना चाहिए? When you see a snake, what should you do? Kill वो him. विषधर सांप होता है। और तो The जो है, poisonous one. जहरीली सांप होता है, पॉइजनस स्नेक होता है, उसको मार देना चाहिए। नहीं तो दूसरे के काटेगा। Otherwise he will उनके kill स्वभाव another है, खल one. जाती है। That's his nature. दुष्ट है। He's a बिना कारण terrorist. जो काटेगा, Without any reason, he can bite you. उसको मार देना उचित है। So you have to kill him.
बोले उसके मारने तो पाप By लगते हैं। killing him, बोले तुम्हें पाप नहीं लगते you will हैं। not get any उस sins. शरीर से उसको मुक्त दे देते हैं। You will only relieve him from that ये body. दुष्ट है। He's a terrorist. बुढ़िया कहने लगी देखो बेटा अच्छा जी So the woman said, okay, ये सांप son, को मार देने से काट देने if से you मेरा kill नाती यदि नहीं जीवित नहीं होगा this snake उसके मार करके and मेरा my फायदा क्या है? grandson will not become alive again, then what फिर use is it to सवेरा kill the कहने लगे, snake? So the ये सांप controller दूसरे of की the करेगा। snake said, he तुम can आज kill तुम्हारे another बेटे one. को काटा, Today he काल killed किसने your कटेगा? boy, tomorrow he ये can सवाल है। kill another one. That's his nature. बुढ़िया कहने लगी देखो But the old woman said, look, जब जिसको मृत्यु आ जाता है when once death has ये तो come, केवल एक मात्र बहाना बन जाता है। then everything is just क्या बोलते हैं उसको? रीजन बन जाता है। a reason. है? वास्तव में रीजन नहीं है वो तो अपने उसकी उसके केवल करता है। The snake is not the cause of the death. He's यदि just आपके मृत्यु नहीं हो सांप because काटने of वाला karma नहीं हो the boy has died. सांप के ऊपर पैर रखने भी वो कटेगा नहीं हो। If your time has not come yet, you can put your foot on a snake and you will not die. So I'm not saying put your foot on a snake. मैं नहीं खा रहा जानबूझ करके मत रखो। Don't put your foot on a snake on purpose. हाँ? सांप यदि आपके पास है जो करेगा When a snake comes nearby, he won't bite you if it's not your time. It's some life experience of myself. Once, when it was very hot, I was sleeping outside and I had drops of sweat everywhere on my body, and a very big snake came and sat on my chest, and he was licking my sweat. And then my mother gave him way to go and he went away. So it's not always that the snake will bite you. That snake is only an excuse, a reason, a way of dying. And the death comes because of your karma. And then that snake said, "Controller, this old woman is right. Why would you kill me? I don't have any fault in this. The child I bit, that's what Yamraj did. He inspired me to bite him. So that's why I bit him. When Yamraj comes, then it's time to go. It's not my fault. So it's not my fault. Yamraj inspired me. So whose fault is it? It's his karma's fault. And then karma came there. He said that's true. According to the way the jiva has lived, that's how the karma will inspire him to work. And he is performing karma. In Gita, Bhagavad is explaining अपने अपने कर्मों के द्वारा कैसे प्रेरित होता है सत्वरजत तम गुणों के द्वारा by the three gunas we perform karma. उसके द्वारा करते रहते हैं इसलिए गीता में गीता ऐसे सुंदर श्लोक शास्त्र है Gita has such nice texts that समस्या समाधान कर देती है all the messages are very clear. काम क्रोध आदि ये सब कैसे क्या है क्या चीज Anger, lust, envy, त्रिगुणात्मिका माया के गुण ही आपकी करा देते हैं क्रोध करा देते हैं they make you angry. The gunas make you angry. And then you perform those karmas. You have the cause and the action theory. There is a cause, and that makes your action. Without cause, you have no reaction. So that's what karma makes us do. And the jiva is living in this world performing karma.
And nature is creating by this. ये प्रकृति है क्या चीज? What is nature? What is प्रकृति Prakriti? एक अर्थ होता है, Prakriti means, संस्कृत में सिनोनिम होता है क्या? स्वभाव, नेचर। Swabhav, the nature. ये स्वभाव बनाते हैं, प्रकृति की होता है क्या? स्वभाव बना देते हैं। यही प्रकृति हमें क्रिया आदि करते रहते हैं। Prakriti is giving us a mood, and these moods are from the three gunas. और फिर And then प्रकृति Prakriti उसी पे कहते हैं भगवान की तरफ वो can स्टिमुलेट होता है, stimulate you towards Bhagwan, performing towards Nirgun. और ये प्रकृति स्वभाव, जीवन की ये स्वभाव जो बनाते रहते हैं। So according to the इस संसार में nature कई प्रकार के लोग के स्वभाव होते हैं, कई सात्विक स्वभाव of होते हैं, someone, you कोई come राजसिक closer to स्वभाव होते Bhagwan. हैं, Someone कोई is in तामसिक sattvic स्वभाव होते mood, someone इसमें is in तुलसीदास जी rajasi भी mood, and रामचरित someone मानस is में in लिख रहे हैं, tamasic mood. ये कौन जीव कहाँ से आए हैं? So which Where jiva have you come from? comes from different हम कैसे places. लगाएंगे? पता कैसे लगाएंगे? How can you know where your आप jiva नरक comes से आए, from? If he नरक came से आए। from Narak or from the heavenly planets. स्टैम्प नहीं लगा नहीं है, There's no stamp on you, लगा हुआ है क्या चीज? स्वभाव। but it's your इसे mood, रामचरित your मानस में लिखा nature. है। You जो can नरक से आने वाले जो recognize one मनुष्य जो है, who's उनके coming from स्वभाव होता Nark, है, तमोगुण होता है। and he is मैं नहीं then करूं, in आप Tamagun. रामचरित मानस I'm पढ़ not करके saying देखिए, this, it's स्पष्टीकरण कर दिया है। written in ये कौन Ramcharitmanas. जीव कहाँ से है? पूरा जन्म Where the कहाँ था? jiva comes from, where was his और कहाँ से previous आए हैं life, वो? you can है तो see अभी it मनुष्य, according to his ये तो nature, नरक his से उठ mood. करके आ रहे हैं। When he इसमें comes जो from तामसिक लोग Narak, होता he is है, in दुष्ट प्रकृति Tamasic लोग होता है, gun. Those are हमारे feelings. तुलसीदास जी कहते हैं वो नरक से आए हैं। ये तामसिक प्रकृति वाली स्वभाव प्रकृति वाली। कुछ लोग आप देखें, And some people without you see reason, without a reason, they are making disturbance to others। they are making disturbances to कारण छोड़ others. करके Without दूसरे any को reason, कष्ट पहुंचाते हैं। they are giving trouble to others. कोई कारण नहीं है, दूसरे There कोई is no जरूरत reason. नहीं है उसको। There is no need for क्योंकि that. स्वभाव पुरुष But की that's स्वभाव their कहाँ nature. जाएगा? जो जिससे जहाँ से आए हैं, From where they come, that's in their उसी से वो nature. करते रहते हैं। And that's how they act. और स्वर्ग से जो लोग आए हैं, And the people उनका that आदि came कर्म from करके the heavenly स्वर्गलोक में planets, गए। who have the और वही pious पुण्य खत्म deeds, होने के when बाद the pious जब deeds इस end संसार में आते and they हैं, have to come वो back to स्वभाव this उसके material रहते हैं, world, वो they सत्वगुण still समाप्त have that होता है। nature. They have the वो होता sattva है कि gun. सत्य बोलते हैं, They झूठ speak बोलने, truth. शौच, दया, पवित्रता, They are pure. truthfulness, purity, and compassion to the others living And they have entities. compassion दूसरे जीवों की towards प्रति others. दया भी करते हैं। ऐसे पुरुषों की कहा जाता है These सत्पुरुष कहा people जाता है। are called जहाँ हम लोग Satpurush. सत्पुरुष करते हैं, साधु तो उसकी When we पहली say बात है। Satpurush, पहले and उसकी Sadhu साधु is की the भाषा first. समझे। साधु उसकी कहते हैं जो सत्पुरुष होते हैं, Sadhu say सत्गुण संपन्न होते the हैं, one who is in उसको तो हम साधु कहते a हैं। Satpurush यद्यपि ये साधु की पूर्णता is called a Sadhu. परिभाषा नहीं है, दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ साधु, बट साधु की It's परिभाषा not the यहीं पर complete definition प्रारंभ of हो Sadhu, जाता है। but there's where जो it सत्गुण starts. संपन्न होता The है, one who is in जो Satgun, परोपकारी होते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरे के जो है। the one who helps others. एक राजा था, There was a king, वो बहुत अपने के जो है अभिमान रखता था, and he ये was मैं very दूसरे के मैं proud of his service towards Help others. करता था, He was शायद। helping others. उनके मंत्री वर्ग में एक दिन And one महाराज day, छद्मवेश माने वेश बदल करके गांव में गए the और गांव में king देखा disguised himself and went into the village. There was an old woman there, वो लकड़ी जो है इकट्ठा कर रही है and she was gathering और उनके wood. इतने इकट्ठा लकड़ी हो गया And when she had the वो wood उठा नहीं together, पाई। she couldn't lift it. कुछ help चाहिए उनको। She needed some help to lift the pile of wood. और राजा ने क्या की And what did the king do? और वो लकड़ी के जो बंडल है ना उसको बुढ़ी के सिर पर He took the pile of wood and put it on her head, and the woman blessed him. Son, तुमने मुझे you helped me साहाଯ୍य किया
I couldn't lift the bundle of wood, and you lifted for me. So the minister said, wow, king. They applauded for him. Wow, king, you are the example for other kings. The way you help others. But there was the prime minister. He bowed his head. He was not applauding. He didn't say anything. So the king said, all the ministers are praising me, how I helped this old woman. But you, what do you think? Prime Minister said, "O king, you did not help her at all. Why? You should have put the pile of wood on your own head and bring her to her house. But now, you put the pile of wood on her head, so what did she got with this? That's not real helping. Real helping is if you take her burden. It's your duty as a king to take the burden of your people. And you have to take that burden on your own head. That's your duty as the king. That old woman could not lift it, so you lift it and put her burden again on her head. Is that helping? That's not real helping. So when the prime minister spoke like this, the king became ashamed. He said, yes, you're right. What is helping another? To release a jiva from this world, bring him to Bhagwan. That's the real upkar, the real help. So everything we are doing, like charity, donation, it is some kind of God help, but not true upkar. Karmi log say no. I am helping you. I'm making a school. I'm donating a school. I'm giving food to the poor ones. Yes, these are good deeds. If one has no clothes and you give them clothes, one who has no food, if you give him food, it's called a donation. Dan. There are different sorts of dan in the Shastras written, but this dan, this charity, is not a real donation. Karmi people don't understand this. They will say, Maharaj, why are you saying like this? But this is not a true donation. Okay, if one has no food, and one day you give him food, so what will happen on the second day? He will get hungry again. So one who has no clothes, and you give him clothes, how long will he wear those clothes? 6 months? At the most? 3 months? Then the clothes will get torn. Sorry. So it's a donation, but it's a temporary donation. I'm not saying don't give any donation. It's a good thing, but this donation is temporary. What I'm speaking of is a permanent donation. What is that donation? By giving this donation, a jiva will have no longer need of things of this material world. And that's Bhagwan Katha. When Bhagwan Katha is brought to a jiva, then this jiva will leave this world and go to Bhagwan. So in Bhagavad it said, tapta jivanam kavividitam kalmasahapam sravana mangalam srimadatam bhuvigrinnanti te bhuridajana tava kathamritam
tapta jivanam kavi vireditam kalmasapaham Sravana mangalam srimadattatam bhuvi grinnanti te bhurida jana. श्रीमद् भागवत में In the Srimad Bhagavatam, Vyasadeva गोपी गीत में बहुत सुंदर में इस कथा को वर्णन किया। has spoken about this katha very beautifully. भागवत में कथा को अमृत को जो पान कराते हैं, Katha of Bhagwan is like nectar, वो सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। and that's the best जितने भी donation. दान हमारे शास्त्र में लिखा From गया, all the donations that are written in the Shastras, वस्त्र दान, food, clothes, ज्ञान दान, जितने भी दान knowledge, की लिस्ट है, of all ये those दान की dons, महिमा वर्णन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? the best donation is Bhagwan Katha एक बार कोई Amritam. जीव भगवान कथा अमृत को पान कर लेते हैं, If a jiva only gets one time इस संसार में the chance to hear about Bhagwan, he can get delivered from this world. That's the real nectar. भगवान की कथा That's श्रवण करने से eternal, फल क्या है? permanent dan. ये जीवों की समस्त प्रकार के जय ताप त्रिताप नष्ट हो जाता है। All the attachments are ये आध्यात्मिक cut. आदि दैविक आदि भौतिक ये त्रिताप नष्ट हो जाता है। all the miseries that come towards you are ended then. You won't have to come back to this world again. भगवान की कथा श्रवण करने से By hearing the katha of Bhagwan, पाप नष्ट हो जाता है। all the sins end of the jiva. ये तब कथा अमृतम अमृत भगवान की तब कथा अमृतम The katha of Bhagwan has nectar. कभी भी ऋणितम ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग इसी कथा को जो है वर्णन करते हैं। All the demigods praise these kathas. भगवान की कथा को हम श्रवण करें। Why have we come here to hear the katha इस of कथा को Bhagwan? श्रवण करने से To listen to his भागवत katha. गीता भागवत की कथा श्रवण करने से By hearing the katha from Bhagavatam कलम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में पाप। in Sanskrit means all the sinful activities will be destroyed. एक बार सकृत में एक बार कोई प्रभु के Just नाम by लेते थे, hearing once सकृत में and calling once Bhagwan's एक बार name, भगवान के नाम ग्रहण करने से भगवान की कथा श्रवण करने by से hearing his katha, पाप all your sins can be destructed. भागवत में अजामिल के नाम अजामिल की कथा Just like the story of अपने Ajamil. बेटा के क्या नाम रखा? Ajamil named his son, याद है do you remember? नारायण बोलो नारायण। नारायण की जय। अपने बेटा के नाम रखते He हैं named his son Narayan. और हम अपने बेटा के And क्या नाम we रखते call our sons what? हैं? क्या नाम रखते हैं? हक्कू बक्कू डक्कू चक्कू Haku, Baku, Daku, Chaku. हैं? अरे Silly बच्चे के names. नाम रखो नारायण If नाम you रखो। give your child a name, call your son Narayan, Govinda, Shyam Sundar, Madan हक्कू Mohan. बक्कू डक्कू चक्कू Haku, नाम से Baku, क्या no बोलते हैं? useless names. अरे कम से कम नारायण नाम रखा गोविंद नाम If you रखा, call संत your नाम son रखा, Narayan, बस बात तो बताओगे। Govinda, then you नारायण will उठ जाओ। call those names. बेटा Narayan, stand गोविंद, up. राम नाम रखो, Son Govinda, son अरे Ram, इधर आ जाओ। come here. भगवान के नाम हो जाता है। Then you will say the name of Bhagwan. माला में यदि नाम नहीं हो रहा है, If you कम से कम can't बच्चा के chant, नाम रखो then राम। at least call your child Ram, and you will still be saying the name of Ram, like Krishna, अभी तो कभी Govinda. आजकल तो बस फैशन हो But गया। in these ये days, सिनेमा आदि, टीवी आदि by देख seeing करके, TV, इंटरनेट टीवी आदि cinemas, देख करके, internet, सब लोग बस हक्कू everyone बक्कू is डक्कू चक्कू, calling their children लड्डू useless फट्टू, names. ऐसे नाम रखते हैं। अरे गोविंद नाम रखते हैं। Call your child Govinda. So इसलिए beautiful. श्रीमद् भागवत में ही कहते हैं, नाम की महिमा इतनी So in है। the Bhagavatam, it's explained what the glories of the Nam are. कभी भी ऋणितम कलम शब्द करते क्या बताया? पाप। एक बार सब By just कलम once साप। hearing the katha of Bhagwan, all your sinful activities will be destroyed. भगवत नाम ही मंगल। And Bhagwan's name is the most auspicious name. भूमि गृह्णन्ति पुरीदा जना, इसी कथा को भगवत कथा को जो प्रचार करते हैं, One who is speaking Bhagwan Katha, who is donating us the Katha of Bhagwan, he is giving the best donation. All the other donations, मना नहीं करता, I'm not against them, क्योंकि शरीर धारण करने के लिए वस्त्र चाहिए। because we need clothes for this हम body. साधु है, हमें I'm a वस्त्र चाहिए कि नहीं sadhu. चाहिए? Do I need हम तो clothes? नंगा बाबा नहीं हैं। I'm not a Nanga Baba. I won't walk around और एक naked. धर्मी जो होता है, वस्त्र भी पहनते नहीं हैं।
Some Babas don't wear any clothes. I wear clothes. It's cold. When it's warm, I'm wearing clothes. I just came from Holland. When I go back, I have to wear a jacket again. Otherwise, I will be Sieram. I will leave this world. It's so cold there. 4 degrees. Here, this is enough. I'm still wet in these clothes from sweat. But in Holland, I need a jacket. So in cold, you need warm clothes. You need clothes. But you need clothes for maintaining your body, because we need this body to do devotional service. In Bhagavad, it said, this body is so rare. You have to maintain your body. It's your duty to take care of your body. You got this body from Bhagwan. And what we got from Bhagwan, we have to take care of very well. Why? Just for the seva of Bhagwan. Ganga Jal. With what? What do you do with Ganga Jal? You worship Goddess Ganga with her water. And the way you worship Ganga with her water, that's how with this body you got from Bhagwan, we do seva for him. So we need clothes to maintain the body. We need food to maintain this body. We have to eat rice and vegetables to keep this body healthy. Because when you have this body, you can do bhakti. And if you don't have this body, how can you perform bhajan? So, donation of clothes and food, it's good. But the best donation is what? Bhagavad Katha Amritam. Sarvana Mangalam Srimadatam or Sarvana Mangalam Srimadatam. Sri Ganit Samast Prakar ki je Subh apne aap aa jata hai. All the happiness will come towards you if you take the name of Bhagwan. The one who gives this katha and donation is called the best donator. Donor. So for 1 minute we will chant together, we do kirtan together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, please sit down. So I pray before you. Please keep saying the names of the Lord. Jai Jai Sri Ram. Pushpaat Bhaktivedanta Maharaj ki jai. Zo mensen, dat was vandaag het derde deel van onze Bhagavad seminar. Gurudev heeft vandaag een mooie aansluiting gemaakt op wat we morgen gaan behandelen. Het is Karma Yoga en ook over Bhakti Yoga. We zullen het morgen uitgebreid beschrijven hoe we tot Bhagwan werkelijk kunnen komen. En de aansluiting vandaag, de voorbeelden die de Guruji gaf, was subliem. Het was een hele mooie aansluiting en we zullen morgen nog verder verdieping doen. Dit is echt een masterclass. Het laatste stukje moet je zien als een masterclass die wij in Nederland organiseren.